Very good evening to all of you, each and every person that is very present over here. So, my name is Satish Yadav, and welcome to the crash course batch of GATE. So, today we'll try to start with the mathematical logic. So, today is our first class, and it is related to what? It is related to mathematical logic. Very good evening to all the people, that those who are present over here. So, we'll try to start about this topic, and that is related to what? That is related to mathematical logic. Very good evening. Very good evening. Okay, so let me tell you about myself. My name is Satish Yadav. Okay, and I'm having more than 9 to 10 years of experience into this teaching field. And we'll try to start about what? We'll try to start about mathematical logic. So let me know that voice is clear, each and everything is clear. So we'll try to start about this concept, mathematical logic. So today is the first class. In this first class, what I will be telling you about is basically propositional logic. Yes, I will teach whole DM syllabus, Saurabh, don't worry about it. I will teach, our team will be teaching the whole DM syllabus, don't worry about it. Okay, so as I was talking about the mathematical logic, see, there are 6 different type of categories of a question that you will be getting into mathematical logic. So there are total 6 different type of questions. On each and every day, I will try to cover one type of questions. So today we'll try to cover one type of questions, and as soon as let me tell you this particular thing. Okay, so first I will be trying to teach here, and then immediately I will be giving you the practice question, and that you will be getting into DPP, and that will be available on. Should I take in basic math? That is not for you, Rohit Raj. And then I will be telling you about DPP that you will be getting on Unacademy. Okay, so 2 things you have to do. Actually, how we are saving the time, this is nothing but method. So here on YouTube, I will be teaching you, and for a practice session, there is one DPP series of mine, that will be DPP DM series, that will be available on what? That will be available on the Unacademy. So you can, first I will teach you here, and then I will tell you go and follow that DPP DM. So immediately you can go and immediately you can follow, and you can solve the question. So in this way we can save a lot of time, and within 35 days or within 30 days we can cover the whole discrete mathematics. So don't worry about the syllabus. I will try to cover each and everything. Not try, I will cover each and everything. So today's topic is based on what? Today's topic is based on the propositional logic. But before thing, let me tell you, there are 2 types of subscription that Unacademy is giving. One is called as a plus subscription, another one is called as a iconic subscription. So you must be thinking, sir, what is the necessity with going with a plus subscription or a iconic subscription? See, iconic subscription, if anybody will be telling, I will be telling you, it's like a personal faculty is sitting near to you, and he will be teaching you each and every concepts regarding that. And in plus, you will be having the live classes, you will be having the test series, you will be having the unlimited practice. These all are the things that you will be getting in plus, and then this is iconic. Okay, so have a patience, I will explain each and everything. There are certain different types of things that will be available on Unacademy. I will always suggest ki go with the 12-month subscription or go with the 24 months ka subscription. There are two advantages are there. One is per month cost is very less, and second one, if Unacademy is starting with any type of batches, you will be part of that particular batch. Okay, तो ये 2 advantage है. मैं हमेशा बोलूंगा कि या तो आप 12 मंथ्स के लिए जाओ या तो 24 मंथ्स के लिए जाओ. और एक अच्छी बात यह है कि जब आप पेमेंट करते हो, यू कैन यूज दिस कोड, एंड दैट कोड इज बेसिकली बाबा20. ठीक है, आपको ये कोड यूज कर सकते हो. दिस इज एडवांटेज पॉइंट फॉर यू. यू कैन यूज दिस कोड एंड यू कैन गेट द, which is nothing but you can get a discount. And those people who have not followed this channel, try to follow this channel. तो क्या होगा मालूम है कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, and then PDF will be available on this channel. So as I have already told you कि what is my plan? My plan is this. First, I will teach you 5:30 to 7 on YouTube. On YouTube, I will teach you. After that, I will tell you कि what is the DPP DM series. आपको ये already recorded है, ठीक है? तो ये मैं आपको प्रेफर कर दूंगा. ये Unacademy पे आपको क्या करना होगा? आपको Unacademy पे ये देखना होगा, ठीक है? It's an optional. This is basically for a practice, daily practice problem, discrete maths. So you can follow these things on the Unacademy. So those people who have not followed me on Unacademy, first of all try to follow me on Unacademy. My name is what? My name is Satish Yadav. ठीक है? उसके बाद में जो notes होगा, the notes you will be getting what? The notes you will be getting this. तो ये हमारी टीम का पूरा प्रोजेक्शन है कि इस तरीके से आपके लेक्चर्स कवर होंगे, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम कवर होगा, एंड इस तरीके से you will be getting the notes.
ठीक है। तो डीपीपी डीएम सीरीज दिस इज ऑप्शनल फॉर यू, इफ यू वांट, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका डीपीपी डीएम दूंगा। टुडे इज अ फर्स्ट क्लास सो नो डीपीपी, टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल टेल यू कि ये वाला अनअकैडमी पे ये वाली सीरीज है आप उसको फॉलो कर लो, अनअकैडमी पे ये वाली सीरीज है आप उसको फॉलो कर लो। चाहिए तो आई कैन ऑल्सो शेयर द लिंक ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, यू कैन ऑल्सो गेट दैट कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रपोजिशनल लॉजिक you have to go and you have to understand with respect to this. So this is nothing but my whole criteria. First I will teach you on YouTube and the notes will be available on this, and from tomorrow onwards you will be having the DPP DM series on Unacademy. नहीं फॉलो किया फॉलो कर लो, बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे फ्री के लेक्चर्स भी हैं वहां पे, ठीक है। So this is regarding the whole operation. Now we'll go and we'll try to talk about the propositional logic. So बीच में you can also see there is a lagging in terms of a YouTube with respect to 1.5 second or something, okay, or hardly 7-8 second जो भी है. So you can reply me. See, the faculty always needs the reply. So if you will be replying on each and every topic, so we can go and we can try to share. See, interaction is very important. If anybody is asking, sir, why the interaction is very important, let me tell you why the interaction is very important. Interaction is very important because when I will be teaching something, when you are understanding something, when you will get something, you will ask the doubt. Asking the doubt is basically thinking. It's an ability of increasing the level of yours. So that's why the interaction is very important. It's not good morning, it's very good evening, Pulkit. Okay. So let's go, let's talk about the propositional logic. ठीक है, तो रिप्लाई मुझे चाहिए ही चाहिए। प्रपोजिशनल लॉजिक, तो हम लोग बात करते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में, एंड विल गो एंड विल ट्राई टू सी ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैट। गिव मी ऑलमोस्ट लाइक 30-35 मिनट्स, ओके, एंड विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रपोजिशनल लॉजिक। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम आल्सो कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ हिंदी में पढ़ाओ, आप मेरे को बोल दे एक बार, आई विल टीच यू दैट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैट। प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि why the GATE has included the propositional logic in our syllabus. We all are computer science students. Most of the times we are doing the programming. We are having the software, we are doing the programming. ये हमारे ज़हन में होता है. We are focusing on this type of questions actually. See, we are a computer science students and then we are having the softwares and we are using the programming language and we are making the software basically. So we are having the programming language and we are making the software. Why the propositional logic has been included in our syllabus? Let me tell you, ये एक coin है, ये बोलते हैं ना coin का एक हिस्सा है, but there are many factors that has been there. What are the factors? Let's try to understand. देखो, आप ये सोचते हो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर बनाना है. Right now I am giving you the motivation why any computer science student will go for a propositional logic. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कहां पे करते हो? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हो एल्गोरिथम में यूज करते हो, लेकिन ये एल्गोरिथम आता कहां से है? एल्गोरिथम आपके आते हैं सेट ऑफ थ्योरम्स से, ठीक है। आपको कुछ थ्योरम्स पता होने चाहिए, जैसे यू पीपल आर गोइंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द एल्गोरिथम, ग्रीडी मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें आप क्या करते हो? ग्राफ लेते हो, तो वो ग्राफ के थ्योरम यू शुड नो. There are certain different types of theorems of a graph you should know, then you can apply the algorithm, then you can convert to a programming language, and from programming language you can convert to a software. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि if you are trying to go and if you are trying to write down any algorithm, you should know the basic of a theorem. लेकिन ये theorem जो है वो आते कहाँ से हैं? theorem जो है हम directly कभी भी proof नहीं करते. We don't prove the theorem directly. What we are going and what we are trying to do, थ्योरम जो होता है that is a set of statements, ऐसे बहुत सारे statements होते हैं and that leads to what? That leads to a conclusion. ये चीज ही हमको क्या बताती है? थ्योरम बताती है. Even in the 10th standard, 7th standard, 9th standard, the faculty used to tell you कि बेटा sin square x plus cos square x equals to 1. Prove it. So you directly cannot come to a conclusion. What you are doing? You are writing sin 30 and then you are writing sin square 30 equals to something. You are writing cos 30 and then cos square 30 equals to something, and then at the end you are adding sin square 30 plus cos square 30 is equals to 1, बराबर, and then it leads to general formula sin square x plus cos square x equals to 1. यही करते हो आप. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि what is the theorem? Theorem is basically a set of statements that leads to conclusion. उसको हम लोग theorem बोलते हैं. तो सर इसमें mathematical logic है कहाँ पे? Mathematical logic I will try to tell you this thing.
Mathematical logic or a propositional logic, it gives me power to validate the statement is valid or not. ये statement सही है या नहीं है, ये statement सही है या नहीं है, ये statement सही है या नहीं है, this statement is valid or not. So mathematical logic का काम कहाँ पे आया? Mathematical logic का काम ये आया to prove the statement, to prove the conclusion. मतलब checking the validity of the statement is the main concern for a propositional logic. ठीक है? Yes, I'm extremely fine. और logic topic में मजा आएगा. Fine. Okay. So what is the propositional logic? The propositional logic is basically what it is trying to say that कि ये क्या करेगा मालूम है? It will try to go and it will try to see कि it is going to be valid or not. ये हर एक statement आपका valid होता है नहीं होता है. मैं फिर से यही चीज के बारे में बात करता हूँ. Suppose if you will be having the large amount of statements and that leads to what? That leads to the conclusion. तो mathematical logic क्या करता है? Math, sir, can you okay, sure, I'll try. You don't worry, okay, my handwriting will not be on pictures, don't worry about it. Okay, so what I was trying to say that, okay, what I was trying to say that कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे और वैलिडिटी चेक करेंगे हर एक स्टेटमेंट का. लेकिन पेशेंस रखो. शॉर्ट टर्म बैच में अगर आप पढ़ रहे हो तो एवरी डे वी आर थिंकिंग दैट यू पीपल विल गिव मी 4.5 आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे आप मेरे को दोगे, ऑलमोस्ट 4 घंटे आप दोगे. माय सब्जेक्ट, सीओए सब्जेक्ट एंड सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स. ओके, तो ये सारी चीजें जो है यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड देन ओनली इट विल बी सक्सेसफुल. Short term batch within 100 days, within 90 days we will complete as per the promise. But what is the another promise that you people have to do? The another promise that you people have to do, you have to sit for 4 hours, then only it will be fruitful. नहीं तो एक बैच में आओगे, दूसरे में नहीं आओगे, तीसरे में आओगे, चौथे में आओगे, there is no meaning of that. ठीक है, लाइव पढ़ा रहे, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन, इमीडिएटली क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो. मैंने जैसा प्रॉमिस किया आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको नोट्स भी दिलवाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू मेक द प्रॉमिस टू योरसेल्फ, you have to come to each and every class, then only it will be fruitful, then only it will be fruitful. So okay, let's come to that point. फिर से पढ़ते हैं जो मैं बता रहा था. ठीक है, what is my point? Mathematical logic, it gives us what? It gives us set of statements and that leads to the conclusion. कहने का मतलब क्या है मालूम है कि बेसिकली ये वाला जो स्टेटमेंट है, whether we can say that it is valid or not, whether it's going to be valid or not, whether it's going to be valid or not, ये valid होगा या नहीं होगा, ये कौन देता है? ये mathematical logic देता है. लेकिन ये जो statements आते हैं वो कहां से आते हैं? वो एक सेट से आते हैं. Let's consider this is a set of English statement. This is basically the set of what? This is basically the set of English statement. ये English statement से भरा पड़ा हुआ है. Here you will get a different type of statement. Let's consider this is statement number 1. Let's consider this is statement number 2. In 10th class, the ma'am have told you or the sir have told you there are different types of English statements. Some are primitive statements, some are ordering statement. मतलब इसमें ना दुनिया भर का statement है. Statement number 2, statement number 3, statement number 4. There are so many English statements into that. तो आप बोलोगे ना कि सर ये स्टेटमेंट जो हम लोग थ्योरम के लिए प्रूफ करते हैं, ये स्टेटमेंट आता कहां से है? ये स्टेटमेंट आपका इंग्लिश स्टेटमेंट से आता है, ये सेट से आते हैं. इस सेट में दुनिया भर के स्टेटमेंट्स, इसमें एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स, यू विल हैव द ऑर्डरिंग स्टेटमेंट्स, you will be having different type of statements, but we don't take all the type of statements. We are taking a special categories of a statement and we are trying to prove the theorem. What is that special type of categories of a statement? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग factual statement बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Factual statement. See, we don't take ordering statement, we don't take requesting statement, we don't take exclamatory statements. मतलब ये सारे statements नहीं लेते. We are only taking the special categories of a statements and these special categories are called as a factual statement. Factual का मतलब क्या होता है? जो चीज facts बताए उसको factual बोलते हैं. ठीक है, ये जो factual statement है इसको मैथमेटिक्स में propositional statements बोलते हैं. What we can say? This is called as a propositional statement. This statement is called as what? This statement is called as a propositional statement. As I have told you, let me repeat this thing. मैथमेटिकल लॉजिक क्या करता है? हमको पावर देता है कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए, बराबर. लेकिन ये स्टेटमेंट रैंडमली थोड़ी होते हैं. ये स्टेटमेंट कहां से आते हैं? ये स्टेटमेंट आते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट से. लेकिन क्या सारे इंग्लिश स्टेटमेंट लेते हैं? नहीं. वी आर ओनली टेकिंग ए स्पेशल कैटेगरीज ऑफ अ स्टेटमेंट्स
those special categories are called as a factual statement. So what is a factual statement? Factual statement in mathematics is called as a propositional statement. So let's talk about a propositional statement. So now I have given you the motivation why to go and why to learn about that propositional statement. तब यहाँ पे क्या आता है? तब यहाँ पे आता है आपका propositional statement. So what is a propositional statement? Propositional statements are factual statement जो मेरे को facts बता दे. क्या facts बताएगा? कि या तो वो सही है या तो वो गलत है. ठीक है, या तो वो सही है या तो वो गलत है. मेरे को डिलेमा में नहीं रखेगा कि सही भी है गलत भी है. नो, इट इज गोइंग टू बी आइदर ट्रू और इट इज गोइंग टू बी आइदर फॉल्स. उसको प्रपोजिशनल स्टेटमेंट बोला जाता है. प्रपोजिशनल स्टेटमेंट इट इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. ये दो तरीके का स्टेटमेंट्स होता है. एक तो हम ब्रेक कर सकते हैं, एक को ब्रेक नहीं कर सकते. सो वन इज कॉल्ड एज अ ब्रेकेबल स्टेटमेंट. ओके, वन प्रपोजिशनल स्टेटमेंट्स वी कैन ब्रेक इट, अनदर वन वी कैन नॉट ब्रेक इट. ध्यान देना कि एक को ब्रेक कर सकते हो, दूसरे को ब्रेक नहीं कर सकते हो. प्रपोजिशनल स्टेटमेंट इट इज ऑफ टू टाइप्स. एक को ब्रेक कर सकते हो, एक को ब्रेक नहीं कर सकते हो. जब आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? सिंपल प्रपोजिशनल स्टेटमेंट. इनको क्या बोला जाता है? इनको सिंपल प्रपोजिशनल स्टेटमेंट बोला जाता है. व्हेन यू कैन ब्रेक इट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कंपाउंड प्रपोजिशनल स्टेटमेंट बोलते हैं. कंपाउंड प्रपोजिशनल स्टेटमेंट. सी एज आई हैव टोल्ड यू, प्रपोजिशनल मतलब फैक्चुअल स्टेटमेंट जो मेरे को फैक्ट्स बता दे, या तो ट्रू बता दे या तो फॉल्स बता दे. या ये क्या करेगा? या तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं या तो ब्रेक नहीं कर सकता हूं. अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा इट इज बेसिकली डिफाइंड एज अ कंपाउंड प्रपोजिशनल स्टेटमेंट. अगर मैंने इसको ब्रेक नहीं किया तो इसको मैं सिंपल प्रपोजिशनल स्टेटमेंट बोलूंगा. एग्जांपल के लिए लेट्स सी दैट. Suppose my name is Satish Yadav. This is a statement and I cannot break it. And this is a true. The difference between propositions, both are same. ठीक है? In mathematics we are calling as a propositional statement. So first thing, we cannot break it. So I have given this example. My name is Satish Yadav. This is a statement, you cannot break it. Second, where we can break it, my name is Satish Yadav and today is holiday. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ. Sir, can you give another example? Yes, I can give another example. Suppose if I will be writing कि 5 is greater than 3. इसको ही factual statement बोलते हैं दोस्त. शिवा, 5 is greater than 3. See, we cannot break this statement. 5 is greater than 3. We cannot break this statement. Compound वाला क्या होगा? Compound के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, example लिख देता हूँ दोनों का, कि simple statement 5 is greater than 3. We cannot break this statement. While if I will be having the compound statement I can write is 5 is greater than or equal to 3. This is a statement we can break it. कैसे break करोगे? 5 is greater than 3 और 5 is equals to 3. See, we can break this particular statement. हम इसको break कर सकते हैं. ये देखना कि एक simple statement ये आ गया है और एक simple statement आपका ये आ गया है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं. तो कंपाउंड स्टेटमेंट ये देखो, वी कैन ब्रेक इट. ये कहां पे ब्रेक किया मैंने? और पे जाके ब्रेक कर लिया है. तो कहने का मतलब है कि सिंपल स्टेटमेंट को वी कैन नॉट ब्रेक इट, कंपाउंड स्टेटमेंट को वी कैन ब्रेक इट. समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाके पढ़ते हैं. सी, सपोज इफ यू विल बी हैविंग अ कंपाउंड प्रपोजिशनल स्टेटमेंट, suppose if you will be having a compound propositional statement, so we can break this compound propositional statement. लेकिन जब हम लोग ब्रेक करते हैं ना, तो कहां पे ब्रेक करते हैं मालूम है? उसके ब्रेकेबल पॉइंट्स पे ब्रेक करते हैं. सी, दिस इज योर कंपाउंड प्रपोजिशनल स्टेटमेंट एंड मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं हर एक जगह पे ब्रेक नहीं कर सकता. आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑन द ब्रेकिंग पॉइंट. इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट्स बोलते हैं. So when you will try to break it ना, ये क्या होगा मालूम है? It will try to cover into two parts. मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा एंड दूसरा सिंपल स्टेटमेंट you will be getting over here. तो आप कहाँ पे ब्रेक करते हो? You are breaking at the breakable points. ये जो पॉइंट होते हैं ना, इसको ब्रेकेबल पॉइंट्स होते हैं. It's like a pen. मैं अगर तोड़ूंगा ना तो ये ब्रेकेबल पॉइंट होता है इसका. इन ब्रेकेबल पॉइंट्स को हम लोग कनेक्टिव्स कहते हैं मैथमेटिक्स में. समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव्स बोलते हैं. तो हमारे पास चार तरीके का कनेक्टिव्स है. वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स. द फर्स्ट कनेक्टिव इज कॉल्ड एज अ एंड, सेकंड कनेक्टिव इज कॉल्ड एज अ और, थर्ड कनेक्टिव इज कॉल्ड एज अ सिंगल इम्प्लीकेशन. ठीक है, सिंगल इम्प्लीकेशन. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव. फोर्थ कनेक्टिव इज कॉल्ड एज अ डबल इम्प्लीकेशन. So as I have already told you, we are having the 4 different types of what? We are having the 4 different types of connectives. मेरे पास 4 अलग-अलग तरीके के connectives हैं, and, or, single implication and double implication. And I am having one type of modifier.
इसको मैं मॉडिफायर बोलूंगा. मॉडिफायर इज व्हाट? मॉडिफायर इज कॉल्ड एज अ निगेशन. निगेशन को मॉडिफायर बोलते हैं. अच्छा, दोज पीपल हु आर हैविंग अ डाउट कि सर निगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ कनेक्टिव्स. Negation is not called as a connective. Negation is called as a modifier. Notation is this. This is called as your notation. तो ये negation क्या करता है ना, statement को modify कर देता है. For example, Einstein is genius. Einstein is not genius. Einstein is genius. ठीक है? Einstein is genius. Einstein is genius is a simple statement. है कि नहीं? Einstein is a genius is a simple statement. You cannot break this statement. Einstein is not a genius, it is called as a modifier. So basically the negation is modifying the statement. Einstein is a genius, Einstein is not a genius. This is called as a modifier. ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है negation. So negation is called as a modifier. We are having 4 different types of connectives. One is called as and, or, single implication, double implication. मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट होता है. कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग ब्रेक करते हैं. हम लोग कहां पे ब्रेक करते हैं? हम लोग उसको ब्रेकेबल पॉइंट्स पे ब्रेक करते हैं. ब्रेकेबल पॉइंट्स को मैथमेटिक्स में कनेक्टिव्स कहा जाता है. तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट, इट विल बी लाइक दिस, एंड सेकंड सिंपल स्टेटमेंट यू विल बी हैविंग लाइक दिस. ठीक है? तो वन सिंपल स्टेटमेंट हियर, अनदर सिंपल स्टेटमेंट हियर. सो लेट्स गो, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर थिंग जिसको हम लोग एंड पढ़ेंगे. सो विल गो एंड विल ट्राई टू लर्न अबाउट दिस एंड. एंड कब यूज करना है? व्हेन यू विल सी बट आल्सो इन इंग्लिश स्टेटमेंट. So my name is Satish Yadav, but today is holiday. So whenever you will see the English statement also, okay, then you have to go and then repeat modifier. Okay, very good. Modifier क्या कहता है कि Einstein is genius. My name is Satish Yadav. My name is not Satish Yadav. That is basically the modifier. I will explain you each and everything. Why you people are worrying about it? I will explain you each and everything. Don't worry. For example, if I will be writing 5 is equals to 3, or if I will be writing 5 is greater than 3, or 5 is equals to 3, if I will put negation here, then what will happen? It will be modifying the statement. 5 is not equals to 3. तो negation लगाने पे ये modify करता है. ठीक है? This statement is basically false right now. क्या ये factual statement है? 5 is equals to 3? Yes, it is a factual statement. Right now it is false. As I have told you, if anything is true or false, okay, that is called as a factual statement. We are talking about the and condition. We are talking about the but condition. Let me tell you. Let's go and let's try to talk about the and condition. So, for example, suppose if you will be having this one particular compound statement. Suppose if you will be having a one particular compound statement. Now, what will happen? If you will break it, जब आप इसको break करते हो, तो आप कहाँ पे break करते हो? आप इसको breakable points पे break करते हो. तो वो breakable points कहाँ पे आता है? वो breakable points ये होता है. That is nothing but and. So here this one is called as a breakable points, and you will be getting this type of things. You will be getting the and condition. Now what you will be getting? ये मेरा compound statement था. अब ये compound statement अब मैं break करके दो simple statement के ऊपर बना दिया. एक चीज, the next statement that I will give you, you may not knowing about it. Let me tell you that particular statement. In mathematical logic, we can only define the truth value directly for a simple statement. फिर से बोलता हूं, हम मैथमेटिकल लॉजिक में सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट का डायरेक्टली ट्रूथ वैल्यू पता करते हैं. कंपाउंड का डायरेक्ट ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है, इनडायरेक्ट ट्रूथ वैल्यू होता है. कंपाउंड का ट्रूथ वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास केसेस होते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू पीपल आर हैविंग द टेबल. तो जिन लोगों को ना ये बहुत, आई हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर हैविंग दिस डाउट कि सर व्हाई वी नीड अ ट्रूथ टेबल. It's not basically a truth table. It is basically a cases. क्यों cases है? क्योंकि मैं क्या करूंगा मालूम है, ये जो compound वाला statement है ना मेरा, I cannot define the direct truth value of this statement. तो ये depend करता है दो simple statement के बीच में. I can only define direct truth value for a simple statement only. अब जैसे कि for example, suppose if I want to go for a movie, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, मेरे दो बच्चों के ऊपर डिपेंड. Let's consider I am having a two children. So here this is first name is 1, second name is statement number 2. तो how I can go for a movie, ये डिपेंड करता है ये दो बच्चों के ऊपर. ठीक है? तो अब मैं पूछूंगा कि मैं मूवी कब देखने जा सकता हूं? जब ये दोनों जाएंगे मूवी देखने तब. So here what are the cases? The cases is both are true, both are going for a movie, then I can go for a movie. If the first one is saying I am ready for a movie, second one is saying I don't want to go for a movie, then I will be saying I don't want to go for a movie.
Here the first one is saying ki I want to go for a movie, this one is saying I don't want to go for a, or this one is saying I don't want to go for a movie, this one is saying I want to go for a movie, then I cannot go for a movie. Here if both are not going for a movie, I will also not go for a movie. This is basically called as the and condition. आप यहाँ पे ध्यान देना कि why the truth, why this thing, why these cases are coming, why the truth table are basically coming. The truth table क्या होता है मालूम है? वो ना आपका कंपाउंड का ट्रूथ वैल्यू पता करने के लिए होता है. तो मैंने जैसा बोला कि कंपाउंड का कभी भी डायरेक्ट ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है, वो डिपेंड करता है ये सिंपल स्टेटमेंट के ऊपर, ये सिंपल स्टेटमेंट के ऊपर. सर आर यू ट्राइंग टू से दैट we can define directly truth value for a simple statement? Yes, we can define directly truth value for a simple statement. We can define directly truth value for a simple statement. That is why we are getting what? That is why we are getting the cases. So these all are the cases. So the truth table is basically what? The truth table is basically the cases. Now let's go and let's try to understand one particular very important concept here. कि suppose if a compound statement is made up of and condition and two simple statement, इसमें से अगर एक भी false हो गया, then the whole thing will become what? The whole thing will become a false. तो ये आपका पूरा का पूरा false हो जाएगा. समझ में आ गया? If a compound statement is made up of two and cases and if any at least one of them will become a false, it doesn't matter कि ये वाला simple statement क्या बोलता है, it doesn't matter ये वाला statement क्या बोलता है, the whole statement will become what? The whole statement will become a false. You can have the observation. See, if one false, this will false. If at least one false, this one will false. So here both are false, both are false. So what is my point? And will be saying कि basically क्या होगा कि आपका at least एक true एक false देख लिया. So the whole statement will become a false. Let me rewrite this as one more time. See, as soon as and will see this false, it doesn't matter ki what this children is saying. The whole statement will become what? False. Now, if I will be having this thing, suppose if I will be having this thing, and if this one will become a false, it doesn't matter. And will see this false, the whole statement will become what? The whole statement will become a false. ये पूरा का पूरा statement आपका क्या हो जाएगा? False हो जाएगा. So I can write one particular concept here, and what is that? And hates false. And hates false. This is a thing that you have to understand, and this is one of the important topic with respect to what? With respect to quantifier. ये quantifier का सबसे important topic है. क्या कि आपका जो and होता है ना, and hates false. Let's consider there is one compound statement that is made up of thousands of simple statement और सबके बीच में and लगा हुआ है. तो उसमें से अगर एक भी false होता है, the whole statement will become a false. So what is my point here? One simple statement and another simple statement and another simple statement, ऐसे thousands of simple statements से compound आपका बना हुआ है. Now if this one is saying false, बाकी के 999 simple statements क्या बोलते हैं? It does not matter. The whole statement will become what? The whole statement will become false. This is the speciality of what? This is the speciality of and. I hope and is clear. I hope what is a compound. I hope what is a simple. अब आपको क्लियर डिफरेंस पता होगा कि सिंपल किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं. हम डायरेक्टली ट्रूथ वैल्यू पता कर सकते हैं सिंपल का. वी कैन नॉट डिफाइन द डायरेक्ट ट्रूथ वैल्यू फॉर अ कंपाउंड. इसलिए कंपाउंड सिंपल के ऊपर डिपेंड होता है. इसलिए मेरे को टेबल आता है, इसलिए मेरे को केसेस आते हैं. और वो केसेस करने के बाद में हियर दिस इज वन ऑफ माय ऑब्जर्वेशन दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड. दिस इज द ऑब्जर्वेशन सच दैट एंड हेट्स फॉल्स. दिस इज द प्राइम thing with respect to what? This is a prime thing with respect to the quantifier. ठीक है, आपको अगर क्वांटिफायर, जो लोगों को क्वांटिफायर में प्रॉब्लम होती है ना, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, एंड इट्स फॉल्स, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. दैट इज माय प्रॉमिस. ओके, लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अदर थिंग. वी आर हैविंग टू केसेस हियर. सो इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट और केस, नाउ व्हाट विल हैपन? और इज बेसिकली टू थिंग. वन इज कॉल्ड एज अ इंक्लूसिव और, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ एक्सक्लूसिव और. We are having two different types of or. One is called as a inclusive or, another one is called as a exclusive or. Inclusive or ये होता है, exclusive or ये होता है. Most of the times in mathematics we are only using the inclusive or. Inclusive or क्या होता है कि one or other or both, one or other or both, or both. Exclusive or क्या होता है? One or other. Exclusive or is saying one or other. And this thing you are having into digital logic. Most of the times exclusive or हम लोग digital logic में यूज करते हैं. Inclusive or we are using into mathematics. जो कोई भी थ्योरम आप देखोगे, whatever the theorems that you people are seeing, वो सारे theorems में क्या होगा मालूम है? Inclusive or लगा होगा.
ठीक है, आप मैथमेटिक्स में कोई भी थ्योरम देखो, सो वो क्या कहना चाहता है कि देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी इंक्लूसिव और, वन और अदर और बोथ। लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि इंक्लूसिव और क्या होता है। सपोज कि इफ योर मॉम इज सेइंग कि इफ यू विल गेट ए इनटू मैथ्स शी विल बी हैप्पी, if you will get a plus into science again she will be happy, okay, and let's consider this is the happiness of your mom, okay. Now if you will get a into maths and you are not getting a plus into science, again she will be happy. If you will not get a into maths but you will get a plus in science, again she will be happy. This is for happiness. Now if you will get both the things, if you will get a into maths and you will be getting a plus into science, again she will be happy. When she will not be happy, when you will not be getting anything, then she will not be happy. This is the truth table with respect to what? This is the truth table with respect to the OR case. आपको ये समझना है. In GATE exam, I want to attend graph 3, but it's up to you, Hariom. You can do whatever you want. You can learn the graph theory. You can learn this also. Okay, so this is basically A is maths and A plus is science, and then she will be happy. So this is a truth table with respect to what? This is a truth table with respect to the OR case that you people can understand. Let's consider this is nothing but one simple statement. This is second simple statement. This is a compound simple statement. So now let's go and let's try to understand this. Sir, exclusive OR तो बता दो. Exclusive OR का मतलब है या तो ये या तो ये, लेकिन दोनों नहीं होता है. A person can be dead or alive, but person cannot be dead and alive at the same point of time. या तो वो मर गया या तो वो जिंदा है. That is called as the exclusive OR. Exclusive OR having large amount of importance into digital logic, but in mathematical logic we are only focusing on the inclusive OR. You know why we will be focusing on inclusive OR? Because your theorems are based on the inclusive OR. तो ये आपका केसेस हो गया. अब एक चीज इसमें आप ध्यान देना कि अगर एक ट्रू आएगा तो भी एक ट्रू होता है, एटलीस्ट वन ट्रू एट दिस इज गोइंग टू बी ट्रू. Now here you will be having both are true, then it is going to be true. Based on that, I can have one particular concept कि if compound statement is made up of two simple statement, if one of the thing is going to be true, it does not matter कि second simple statement जो भी आए, the whole statement will become what? The whole statement will become a true. Second case, if it is made up of two OR cases and if one of the thing is going to be true, my compound propositional is made up of three different types of simple statement. उसमें से अगर एक ट्रू होता है, it doesn't matter कि आप ये दोनों simple statement क्या बोलते हो, पूरा का पूरा statement क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. Let's consider there is one compound statement that is made up of thousands of simple statement and then there is a OR cases inside between them. If one of them is going to be true, again this is the basics of a quantifier. This is the basics of a quantifier. And then this whole statement will become what? The whole statement क्या हो जाएगा, true हो जाएगा. So based on that I can easily write कि OR loves true. I can easily write कि what? OR loves true. So two things you have to remember. One is and hates false. Second thing is OR loves true. Always try to remember, if you are watching this video, try to pronounce it so that your mind can be familiar with this. And hates false or loves true. And hates false or loves true. Yes, this is a very abule sir kya bacche jaise harakat hai. But believe me, if you will be remembering this, it will be very helpful in quantifier. When I will be teaching the quantifier, I will be telling कि बेटा देखो मैंने वहां पे बोला था. I have already told you with respect to this particular concept. अब हम लोग जाते हैं और सिंगल इम्प्लीकेशन के बारे में बात करते हैं. So we'll go and we'll talk about the single implication, and this is one of the important topic that most of the people you are having this problem, single implication. Single implication is having this particular notation. ठीक है, when to use, when not to use. Suppose if you will be having this P implies Q. What are the different things जब मैं single implication use कर सकता हूँ? पहला ये आएगा कि if P then Q, if P then Q. सेकेंड वाला कि if P, Q. जब आप लोग ये सारा चीज देखोगे ना, तब आप लोग ये यूज कर सकते हो, ये साइन यूज कर सकते हो. दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज नथिंग बट P implies Q. ध्यान से सुनना. मेनी पीपल आर हैविंग, yes Ankit, you are right. So most of you people are having a problem with respect to single implication and GATE loves single implication. गेट के हर एक साल में सिंगल इम्प्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन होता है. सो बिलीव मी, गिव मी जस्ट 5 minutes, I will clear all the doubts related to single implication.
Let's go, let's try to understand. See, if P then Q आएगा तब आपको यूज करना है. If P comma Q. Second one, if you can see Q if P, again you have to use P implies Q. Third one, when you will have Q when P, again you have to use P implies Q. When you will see Q whenever P, again you have to go and again you have to use the same notation. When you will see P only if Q, फिर से आपको ये नोटेशन यूज करना है. एंड व्हेन यू विल सी Q अनलेस नेगेशन ऑफ P, फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको ये वाला ही नोटेशन यूज करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड आउट ऑफ द होल थिंग, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तीन चीजें ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू गेट. एंड इफ यू विल सी द गेट क्वेश्चन आल्सो, if you will see the gate question also, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि it will create a large amount of problem. So whenever you will be having ये वाला, अगर आपने नोटेशन देख लिया तो कब कब आपको यूज करना है ये वाला नोटेशन, you have to use when you can see any one of these things, then you can go and you can try to use it. Okay, yes, we have to remember, yes, you have to remember, but the thing is when you will do a little bit of practice, then you can easily आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो. देखो ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, ठीक है. सेमेस्टर ये हमने स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया है एंड इट इज टोटली फ्री. सो विद इन 100 and 120 डेज पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे. लेकिन प्रॉमिस एक चाहिए कि यू हैव टू बी प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. आपको वीडियो लाइक करना है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, तो ही ये सक्सेसफुल होगा. जैसा मैंने बताया कि ईच एंड एवरी फैकल्टी इज वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव यू गुड कंटेंट, तो मैंने भी वही बोला है कि आई विल कवर द टॉपिक हियर, फिर मैं आपको डीपीपी भी करवाऊंगा, आई विल सॉल्व यू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम आल्सो, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा. तो विद इन दिस यू कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें कवर हो जाएंगी. सो माय पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट टू ईच एंड एवरी पर्सन, यू हैव टू मेक. सी, there is one statement by Warren Buffett, you do not need to be smart, but you have to be self disciplined. So if you will be self disciplined, then you can easily crack this gate. Let's crack this gate together with the help of this short term patch. चलो सिंगल इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं. It will create what? It will create a lot of problem. एक स्टेटमेंट ले लेते हैं. Let's take this statement. If you will win the match, if you will win the match, then I will give pizza party. Then I will give pizza party. This is my statement. This is my statement. Single implication is also called as a conditional statement. Why it is called as a conditional statement? Because it always gives you condition. Here this is my condition. And what is that condition? Ki if you will win the match, then I will give you the pizza party. This is my condition. Second type of example, for example, आपके पापा बोलते हैं कि if you clear the gate, then I will give you bike. So there is one condition. So first they are putting one condition and then there is one result. What is the condition? Clear the gate. What is the result? You will get the bike. So what is the condition? Clear the gate. What is the result? You will be getting bike. This type of thing is also called as a conditional statement. You can make a notes आशीष, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है. वो टेलीग्राम चैनल है ना हमारा अनअकैडमी गेट कंप्यूटर साइंस वाला, देयर आई कैन सेंड यू द लिंक पीडीएफ. ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे. सो इफ यू विल विन द मैच, देन आई विल गिव यू पिज्जा पार्टी. इसमें सबसे पहले तो हमको क्या करना मालूम है, सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है. सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इफ. तो होगा क्या कि इफ के बाद में आपको क्या ढूंढना है, देन होगा या तो कॉमा होगा. Now let's go, let's try to see कि इसके बाद में क्या है कि if, उसके बाद में there is a then. So this will become the first simple statement and then this one will become a second simple statement. तो अब condition क्या होगी कि ये आपका P होगा, ये आपका Q होगा and then this one will become what? This one will become P implies Q. Let's go, let's say इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं आज क्लियर कर दूंगा ये, ठीक है. आप मेरे को डाउट पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर if you will be focusing, it has been seen into the history in my class, if you will focus for 10 to 15 minutes, डाउट नहीं आता है. किसी से भी जाके पूछ लो मेरे बच्चों से. स्टेटमेंट क्या कहता है कि if you will win the match, then I will give you pizza party. What will be the cases? Cases की you will win the match, I will give you the pizza party. Let me write down all the cases. So if I will be writing down all the cases, this is when, and then this is going to be what? This is going to be pizza. This is going to be when, this is going to be a pizza. Let me write down all the cases. What will be the cases? पहला वाला क्या होगा कि you will be having when and then you got the pizza.
सेकेंड केस कि यू won the match but I have not given you the pizza. थर्ड केस you have not won the match and fourth case this is all going to be true. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है कि मैं अपनी प्रॉमिस कब खराब करता हूं. ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स कब बनेगा? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स बनेगा जब मैं अपनी प्रॉमिस तोड़ूंगा. मैं अपनी प्रॉमिस कहां पे तोड़ता हूं कि आपने मैच जीत लिया, मैंने आपको पिज्जा नहीं खिलाया, यहां पे मेरा प्रॉमिस जो है वो खराब होता है. समझ में आ? यही चीज है ना कि इफ यू क्लियर, आपके पिताजी बोलते हैं, योर पेरेंट इज सेइंग दैट, योर डैड इज सेइंग कि इफ यू विल क्लियर द गेट एग्जामिनेशन देन आई विल गिव यू बाइक. यू क्लियर द गेट एग्जामिनेशन, सो कंडीशन एंड रिजल्ट, आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, यू विल गेट द रिजल्ट. तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट देन यू विल बी सैड. यहाँ पे प्रॉमिस आपका खराब हो रहा है. पहला वाला केस क्या है कि आपने मैच जीत लिया, आपको पिज्जा भी मिल गया, तो यहाँ पे प्रॉमिस तो खराब हो ही नहीं रहा. सो दिस टू केसेस आर इजी. ये वाले जो है वो इजी केसेस है, समझ में आते हैं मेरे को. तीसरा वाला केस है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. You have not won the match. Okay, you have not won the match. Then, but still I am a good person. I gave you pizza. What will be the result of that? Result मेरा true आएगा क्योंकि मैं अपनी promise break नहीं कर रहा हूँ ना. See, I am not breaking my promise. Here you will have the problem with respect to this two statement. I will clear that also. यहाँ पे ये false हो रहा है, यहाँ पर ये भी false हो रहा है, and then this statement will become out, the statement will become a true. अब सुनना, I will give you the explanation with respect to that. These two cases, the last two cases, I will give you the explanation. See, what is the condition over here? The condition is कि पहला वाला false हो रहा है. Focus, focus. I will give you pizza party, or if you will win the match, if you will win the match, I will give you pizza party. Statement, when the statement will become a false, when I will break my promise. But you lost the match. If you lost the match, my promise will never be going to be broken. क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि पहला ट्रू होगा, उसके बाद में you will go and you will see the result ना. कंडीशन ट्रू होने के बाद में you will see the result ना. But you have lost the match, so you cannot say anything. आप कुछ बोल ही नहीं सकते. मेरा प्रॉमिस हमेशा क्या होगा? ट्रू ही होगा. See here, if it is going to be false, डाउट रहेगा, लिख देना वहां पे, सर मेरे को डाउट है. ये सेकंड वाले स्टेप में मैं फिर से बता दूंगा. So here what it is trying to say that कि if your first statement will become a false, आपका प्रॉमिस कभी ब्रेक नहीं होगा. आपका प्रॉमिस कभी ब्रेक होता ही नहीं है. तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो आपका प्रॉमिस नहीं ब्रेक होता है. मैथमेटिक्स के हिसाब से बोलूं तो अगर पहली चीज फॉल्स होती है ना, दैट विल बिकम द रॉन्ग एग्जांपल एंड देन द होल स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट? द होल स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू. द होल स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू. होल स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू. लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल. If x is even number, or before that let me tell you this particular cases कि if true and true, then here you will be getting true. So this is going to be what? This is going to be p implies q. This is p, this is q, this is p implies q. देखो थोड़ी सी चीज समझ में नहीं आती है ना, तो फिर होता क्या मालूम है? क्या बोलते हैं यार, नहीं देखते हैं वीडियो. ऐसा नहीं करना है. दैट इज बेसिकली क्वेश्चन को आप जिता रहे हो. This is true, this is true, this is going to be true. This is true, this is false, this one will become a false. This one is false, this one is true, this statement is true. This statement is false, this statement is false, this statement is true. These two statements actually creates the problem. ये वाले easy हैं. मेरा क्या कहने का मतलब है कि if you will win the match, if you will win the match, then I will give you pizza party. But actually ये क्या हो रहा है कि you lost the match. If you lost the match, मेरा प्रॉमिस कभी खराब ही नहीं होगा ना. मैंने क्या बोला था कि आप मैच जीत के आओ, मैं आपको पिज्जा पार्टी दिलाऊंगा, लेकिन आप तो मैच हार गए, तो मेरा स्टेटमेंट थोड़ी खराब हुआ आपके हारने की वजह से. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई मी. सी व्हाट स्टेटमेंट इज यू विन द मैच. आपके घर पे, दूसरा एग्जांपल लेता हूं. लेट मी टेक द अदर एग्जांपल. आप अपनी सिस्टर को बोलते हो, You wash the dish, I will prepare the food. ठीक है? If you will wash the dish, I will prepare the food. ठीक है? ठीक है? If you will wash the dish,
I will prepare the food. But your sister has not washed the dish or has not, उसने डिश वॉश नहीं किया है, तो क्या होगा? आपके घर पे मम्मी आई, बोली खाना क्यों नहीं बनाया, तो आप बोलोगे कि उसने डिश नहीं बनाया, तो एक्चुअली आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अगर उसने डिश वॉश किया होता और आपने खाना नहीं बनाया होता तो आपको मार पड़ती ना, समझ में आया? तब आपको मार पड़ती, लेकिन उसने ही डिश वॉश नहीं किया है तो आपको तो कभी मार ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आपने बोला था कि पहले तुम डिश वॉश करो, आई विल प्रिपेयर द फूड। उसने डिश वॉश नहीं किया तो मम्मी को बोला कि तुम उसको देखो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? तो एक्चुअली इफ इन अ implication whenever you will be having the statement, if false implies anything, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? पूरा का पूरा स्टेटमेंट, This whole statement will become what? The whole statement will become a true. कहने का मतलब है कि आपकी सिस्टर ने डिश वॉश नहीं किया है तो आपको कभी मार नहीं पड़ेगी. False implies anything, the whole statement will become what? The whole statement will become a true. So this is the observation that we are getting with respect to what? With respect to this particular statement. कि anything in implication, if the first one will become a false, ये blindly पूरा का पूरा statement क्या हो जाता है? True हो जाता है. तो actually if your sister is not washing the dishes, then आपको कभी मार नहीं पड़ेगी. Why? Nobody will be scolding you because this is the first step that you have given to her, but she has not completed it. So you will always be free. So always remember, false implies anything, the whole statement will become what? The whole statement will become a true. This is basically with respect to single implication, and everyone has to understand with respect to that. समझ में आ गया कि ये false implies. This is observation number 1. This is observation number 1. Second observation that I can tell you over here, कि if anything is implying true, if anything is implying true, so here this is the second observation. So observation number 2, if anything is implying true, always it is going to be what? It is always going to be true. So always try to understand two observation. If false is implying anything, the whole statement will become a true. If anything is implying true, the whole statement will become a true. This is with respect to what? With respect to the single implication. Understood? Understood or not? Okay, in this way we can go and we can try to understand. Okay, in this way we can go and we can try to understand. विशाल थोड़ा और वेट करो, धीरे धीरे जैसे आएंगे I will give more explanation. Actually I will give you more explanation. You will love the discrete mathematics, and you can also ask your senior. I don't teach discrete mathematics. I will give you the visualization of a discrete mathematics. Today is first class babu. Okay, second thing, double implication. So let's go, let's talk about the double implication. Basically what is the double implication? So here I will be having this double implication. Double implication, when you have to go and when you have to use it. We have to go and we have to use it. P double implication Q. This आपको कब यूज करना है? जब आपको दिया होगा P and only if Q. If and only if. Second thing that you have to understand is basically this. When you will get this type of cases, I double F, then you have to go and you have to use what? Then you have to go and you have to use, okay? Then you have to go and you have to use the double implication. Let's see the truth table of the double implication. The double implication you will be getting, both should have a same behavior. So try to understand, P double implication should have what? Both should have a same behavior. Both should have what? Both should have a same behavior. Then we can go and we can use the double implication. Let's consider this. So here you will be getting what? Here you will be getting P double implication Q. This is going to be true. This is going to be true. ये आपका true हो जाएगा. This is going to be false. This is going to be false. ये आपका true हो जाएगा. And then this is going to be true. This is going to be false. ये आपका false आ जाएगा. This is going to be false. This is going to be true. ये आपका false आ जाएगा. So in a double implication, always try to remember it should have what? It should have a same behavior. Then only you can go and you can learn about it. It should have what? It should be having a same behavior. It should have what? It should have a same behavior. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Double implication बोलते हैं. ठीक है? I have to take the one theorem, but right now you people have not learned about the graph theory, so I will not be taking a theorem. But if you people know about the Euler graph, so there is a if and only if. So try to understand, if and only if is very important with respect to the theorems. So Euler graph, if and only if all degrees are even, so it should be having the same behavior. So whenever you people are learning with respect to what? With respect to the double implication, always try to understand both should have what? Both should have the same behavior. Then only you can go and you can learn about this particular concept. That is with respect to same behavior. We'll go and we'll try to understand the other thing that is very important and it creates a large amount of confusion. तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ. मेरा connectives हो गया है. अब मैं एक दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ और मैं वो दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ.
Let's consider, suppose if I will be having following number of a tables. ठीक है, following number of a tables. Let's consider I'm drawing this type of tables here. So let's go and let's talk, discuss about this type of tables here. See, the last expression, I will be talking about the last expression. I will be talking about the last expression. Suppose if I will be taking this as P, this as Q, and let's consider this is nothing but what? This is nothing but P and Q. So here what you will be getting, this is true, this is true, you will be getting true. This is true, this is false, this is going to be false. This is false, this is true, it is going to be false. This is false, this is false, it is going to be false. तो ये जो है ना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट एक्सप्रेशन, मैं ये लास्ट एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ. So whenever you will see any table and if you can find out at least one true, if you can find out what, if you can find out at least one true, if you can find out at least one true, then this expression is called as a satisfiable. क्या बोलोगे इसको? इसको बोलेंगे satisfiable. This expression is called as a satisfiable. Okay, so I hope you will have a problem. तो मैं क्या करता हूँ, ये निकाल देता हूँ. ठीक है, try to understand. See, if it is going to be what, at least one true, then the last expression, this expression is called as what, satisfiable. Example के लिए ये देखना, P and Q, here I can see at least one true, so this expression is called as what, this expression is called as a satisfiable. This expression is called as what, this expression is called as a satisfiable. Okay, समझ में आ गया satisfiable क्या है? So if you will see at least one true, at least one true, if you will see at least one true, then this expression is called as a satisfiable. Let's see the second case that you will be having here. So in a second case, if the last one, if the last row, you will be getting all the thing as a true. If you will be getting all of the thing as a true, then this expression is called as what? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं tautology. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टॉटोलॉजी बोल लो, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वैलिड भी बोलते हैं. ठीक है, ऑडियो प्रॉब्लम है क्या? शायद इको आता होगा थोड़ा सा, बस सुनाई दे रहा है. ठीक है, satisfiable. So can I say that all valids are satisfiable? Can I say that all valids or tautologies are satisfiable? Yes, I can say that all valids or tautologies are satisfiable, but vice versa is not true. Okay, all satisfiable, but vice versa is not true. But vice versa is not true. Vice versa is not true. Vice versa is not true. ठीक है, so all satisfiable. See, what is my explanation? अगर ये लास्ट में सबके ट्रू आ जाता है, when you will be getting everything as a true, when you will be getting everything as a true, then this statement is called as what? This statement is called as a tautology. या तो इसको tautology बोलते हैं, या तो इसको हम लोग valid बोलते हैं. सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइबल का मतलब ये होता है कि अगर ये टेबल में ना एटलीस्ट एक ट्रू देख ले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाइबल. ये टेबल में ना एटलीस्ट एक ट्रू देख लेगा ना, तो द होल स्टेटमेंट, ये वाला जो एक्सप्रेशन नहीं है, उसको सेटिस्फाइबल बोलता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेटिस्फाइबल एंड व्हाट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फाइबल एंड टॉटोलॉजी. ठीक है, अब दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, दैट विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, सो लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू सी दैट प्रॉब्लम. हाँ, मुझे पता था. ओके, सी व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट, आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. सी व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट कि इफ यू विल सी एट लीस्ट वन ट्रू, ये जो लास्ट के एक्सप्रेशन में ना, इफ यू विल सी एट लीस्ट वन ट्रू, एट लीस्ट वन ट्रू, देन दिस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ सेटिस्फाइबल. इसको हम लोग सेटिस्फाइबल बोलेंगे. जैसे कि एग्जांपल के लिए पी क्यू एंड देन पी एंड क्यू ले लो, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, यू विल बी गेटिंग एज फॉल्स. दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, यू विल बी गेटिंग एज फॉल्स. एंड है ना, यू विल बी फॉल्स एंड फॉल्स एंड यू विल बी गेटिंग फॉल्स. ये देखना कि लास्ट वाले में, ओके, लास्ट वाले में हियर आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू. तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया. तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या हो जाएगा? आपका सेटिस्फाइबल हो जाएगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो सेटिस्फाइबल मींस व्हाट? At least one true देख लिया, the whole expression will become a satisfiable. अगर सबके अंदर true आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे valid बोल सकते हैं इसको, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? tautology बोलते हैं. ठीक है, valid बोलो या फिर tautology बोल लो. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारे valid satisfiable होंगे? Can I say that all valids are satisfiable? Yes, all valids are satisfiable. I can easily say that all valids are satisfiable, but vice versa is not true. ऑल वैलिड्स आर सेटिस्फाइबल, क्योंकि सेटिस्फाइबल के लिए तो एटलीस्ट एक चाहिए, वैलिड में तो सारे होंगे ना. सो आई कैन से दैट ऑल वैलिड्स आर सेटिस्फाइबल,
but vice versa is not true, but vice versa, is not true, but vice versa is not true. Okay, all valids are satisfiable, but vice versa is not going to be true. Clear? Next statement, suppose if I will be having this two diagram, let's go, let's try to understand here. So here I will be having this two diagram मतलब ये टेबल है, ठीक है, और ये लास्ट एक्सप्रेशन पे हम लोग बात करेंगे. We will be talking about what? We will be talking with respect to the last expression. हम लोग ये लास्ट एक्सप्रेशन के ऊपर बात करेंगे. इसमें if all are false, तो ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन. क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन. इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन. इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्राडिक्शन. इफ दिस एक्सप्रेशन इज neither tautology, ठीक है, nor contradiction, neither tautology nor contradiction, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी. क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रू एंड फॉल्स. So based on that, can I say that all contingencies are satisfiable? All contingencies are satisfiable. Yes, I can say that all the contingencies are satisfiable. क्यों? कंटिंजेंसी में क्या होगा? नाइदर टॉटोलॉजी मतलब फॉल्स भी मिलेगा, नाइदर कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ट्रू भी मिलेगा. सेटिस्फाइबल के लिए तो एक ही ट्रू चाहिए ना, एटलीस्ट वन ट्रू. इट विल रिक्वायर एटलीस्ट वन ट्रू. So all contingencies are satisfiable. We can easily say that all contingencies are going to be what? All contingencies are going to be satisfiable. We can easily say that. But can I say that all satisfiables are contingency? All satisfiables are contingency? No, this statement is wrong. क्योंकि satisfiable में एटलीस्ट एक ट्रू होगा. ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ट्रू हो सकते हैं ना. All satisfiable are contingency. This statement is false. The second statement is false. All satisfiables are contingency. ये statement false हो जाएगा आपका. Second वाला statement क्या हो जाएगा? False हो जाएगा कि all satisfiables are contingency. No, all satisfiables are not contingency. अगर आपको लग रहा है कि सारे satisfiable contingency है, तो सारे valid satisfiable होते हैं, और आपको लगता है कि सारे satisfiable contingency है, मतलब सारे tautology contingency होंगे. That's a rubbish thing actually. That's a rubbish thing. So all contingencies are satisfiable. Contingency मतलब होता है combination of true and false. उसमें satisfiable को एक चाहिए तो ये true बता देगा. So this statement will become what? This statement will become a true. While this statement will become what? This statement will become a false. ये statement आपका क्या आ जाएगा? False आ जाएगा. So that is the differences between true and false. So in this way you can go and you can try to understand with respect to this particular cases. ठीक है? ठीक है. अब जाते हैं. We have अभी हमने बेसिक कवर कर लिया है. We'll go and we'll try to solve the problems. Suppose if I will be having this case, let's consider P and let's consider P implies Q, and let's consider this is nothing but negation of Q or T. T नहीं लेता हूँ, X ले लेता हूँ. ठीक है? And then here what I will be getting? I will be getting negation of Q or X, and then this whole thing is implying what? This whole thing is implying X. ठीक है? So P and P implies Q and negation of Q or X, and then the whole thing is implying X. So can you find out it is going to be valid or not? Can you find out it is going to be tautology or not? Valid और tautology एक ही चीज होती है. ठीक है? Tautology और valid एक ही चीज होती है. देखो आज आप लोग आए हो यहाँ पे, तो I will teach you this. ये टाइप 1 है. ठीक है? मैं एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको आज पढ़ा के जाऊंगा, और वो ये है, and this is very important, and I will teach you how you can solve this type of questions, and you will be very क्या बोलते हैं कि you can easily solve it. I will not be using any truth table. Believe me, in my whole mathematical logic class, whether it is 3 days, 4 days, 5 days, whatever, I will not be using a single table, and then I will be going and I will teach you कि कैसे आप सारे questions solve कर सकते हो. So if I am giving you time, try to go and try to solve whether it is going to be tautology or not. I know that what you people will do. You people will be going and you people will be trying to do what? आप क्या करोगे मालूम है? आप इसमें क्या करोगे? टेबल बनाओगे. लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है. You will get 8 rows. ठीक है? Yes or no? Yes or no? You will be getting 8 rows.
But what about the 4 variable? But what about the 5 variable? It will create the large amount of problem. So that's why we'll try to understand with some other technique. Okay? So right now I'm giving you one particular. Okay, you want to use laws and methods. You can use it, no problem into that. Let me tell you, or just let me know that it's a tautology or not. Okay, so first let me tell you कि ये tautology है या नहीं है. Then I will teach you my method, how I am going and how I am teaching you my method. That is also very important. Not valid, P and Q. It is valid. Shiva, it is valid. बोल सकते हैं ये valid है. We can say that it is going to be what? We can say that this is going to be valid. We can easily say that it is going to be valid. Okay? We can say that it is going to be what? It is going to be valid. हम लोग बोल सकते हैं ये valid होगा. Yes, Shiva. Yes. ठीक है. अच्छा, those people who are trying with the help of a truth table, you can try. But here this is my method. Let's go. Let's try to solve this method. आपने ये मेथड देखना कि ये मेथड को मैं कैसे बताता हूँ, ये मेथड को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. पहले तो देखो, सुनो. Listen everyone. Listen. Hello. Listen. क्या करना है? जो चीज जिंदगी में सच होती है, दुनिया की कोई भी ताकत से झूठ साबित नहीं कर सकती. सर व्हाट रबिश. नो, लिसन. डायलॉग का डायलॉग है, काम भी आ जाएगा यहाँ पे. जो चीज जिंदगी में सच होती है, दुनिया में कोई भी उसे झूठा साबित नहीं कर सकता. और जो चीज झूठी होती है वो कभी सच नहीं बन सकती. ठीक है? आप बोलोगे सर ठीक है, चलो डायलॉग मारना था आपको, आपने डायलॉग मार लिया, लेकिन हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस, आई विल लिंक दिस. बिलीव मी, जो मैं बोल रहा हूं इट इज नॉट वेस्ट थिंग. ठीक है? मैं इसको कनेक्ट करूंगा. सुन लो बस. जो चीज हमेशा सच होती है, आप उसे कभी झूठ नहीं बना सकते. अब ये देखना, मेरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर ये चीज सच होगा तो मैं इसे झूठ नहीं बना सकता. If you people are having with respect to English or Hindi, you let me know that I can explain it in both the languages. What is my point? My point is कि अगर ये टॉटोलॉजी होगा मेरे दोस्त, तो मैं इसको जिंदगी में कभी फॉल्स नहीं बना सकता. लेकिन मैं अगर इसको फॉल्स बना दिया तो ये टॉटोलॉजी नहीं होगा ना. समझ में आया? अगर ये चीज टॉटोलॉजी है तो मैं इसे कभी जिंदगी में फॉल्स नहीं बना सकता. अब मैं क्या करूंगा मालूम है? अब मैं इसको फॉल्स बनाऊंगा. जैसे कि I will give you another example. I will try to give you another example. ये 4 साल का यहाँ पे बच्चा है. ठीक है? इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया एक दिन. ठीक है? इसने ही तोड़ा. मैं घर पे गया और मैं घर पे पूछा कि क्या तुमने मोबाइल तोड़े, तो इसने बोला मैंने मोबाइल नहीं तोड़ा है. तो मैं फिर से पूछूंगा क्या तुमने मोबाइल तोड़ा, इसने बोला मैंने मोबाइल नहीं तोड़ा है. मैं डांटूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैंने मोबाइल तोड़ा है कि नहीं? तो वो झूठ था. तो वो एक पॉइंट पे आके झूठ पकड़ा जाता है. Okay, fine, son. I'll explain in English. So my point is, if anything is true, if anything is a tautology, you cannot convert whatever you do, you cannot convert that statement as a false. That is nothing but my explanation. Again, I will be explaining the same thing. Suppose if I will have a 4-year child and he has broken my mobile phone, I'll go to home and I will ask to that person, have you done this? That person is saying no initially because he is a child. Again, I will be going and I will be saying no because he will be child. But if I will force and if I will scold him, then finally he will accept. What is my point? If anything is false, after pressurizing that thing, it will become as a false. But if anything is true, whatever you will pressurize, it will never become a false. So, what is my point? My point is, I am trying to see that, मैं क्या करना चाहता हूँ ना? I am trying to see that कि मैं इसको false बना लेता हूँ. अगर मैंने इसको false बना लिया, तो ये tautology नहीं होगा. लेकिन अगर इसने मेरे को false बनाने से मजबूर कर दिया, तो ये tautology होगा. Proof by contradiction. ठीक है? So let's try to understand. So what I will go and what I will try to do, I see the whole case is basically, please listen. Somebody gave me this question and then he told, try to find out it's a tautology or not. I will say to that person, if I can convert this expression into a false, okay, if I can convert this expression into a false, then it is not tautology. If it is not a tautology, but if this expression deny, if this expression will deny, then I can say the deny of what? To change to false.
deny to change to false, to change to false, then I can say that this statement will become what? This statement will become a tautology. I can easily say that this statement will become a tautology. So if this expression convertible to a false, it's not a tautology. If this expression deny to change to a false, it's a tautology. Let's try to find out this thing. So this whole expression will be false. ये पूरा केस false होगा एक ही केस पे कि पहला true आ जाए और दूसरा false आ जाए, बराबर है कि पहला true आ जाए दूसरा false आ जाए, लेकिन there is a and cases in between. That defines what? That defines that this P is, that means that each and everything is going to be what? That each and everything is going to be true. That means this one is also going to be true, this one is also going to be true, this one is also going to be what? This one is also going to be true. ठीक है? So this one is also going to be what? This one is also going to be true. तो ये भी true होगा, ये भी true होगा, ये भी true होगा, क्योंकि left side में I have to take this as true. Now I got the value of x as a false. कोई और value मिला p. I got p as a what? I got p as a true. Okay. Now see, the whole statement is true. What is the value of x? Value of x I got as a false. Now what should be the value of this I should get? Value of this I should get as a true. You know why? Because this whole statement is true. So what is the value of q I will be getting? Value of c, negation of q is true. So q I will be getting as a false. Now substitute over here. See, this one is what? P is, what is p? P is basically true. And what is q? Q is basically false. So now what will happen? True implies false. Here I will get false. False will see the and condition. The whole statement will become a false, and false implies anything, the whole statement will become a true. So actually I was trying to convert this statement into a false, but it turns out to be true, hence it is going to be tautology. मतलब जो चीज सच है आप उसे कितना भी झूठा बनाओ वो हमेशा सच्ची होती है. This is basically concept of tautology. In this way I can go and I can try to explain you. If you want I can explain you one more time. I know that शुरू में initially for 10 to 15 minutes you will be in some kind of dilemma कि कहाँ से आ गया. But actually this is one of the best method in mathematical logic you can solve. This is one of the best mathematical methods that you can solve it. Okay. So actually see, I won't teach you further until and unless you will be having this how to solve the type 1. This is the type 1 of mathematical logic and you can immediately you can solve it. Okay. I know that you want me to explain one more time. I can explain you. This is P. Let's consider this is P and this is nothing but P implies Q, and let's consider this is nothing but negation of Q or X, and then the whole thing is implying what? The whole thing is implying X. मुझे इसको false बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लेफ्ट वाले को ट्रू लूंगा और राइट वाले को false लूंगा. लेकिन लेफ्ट वाले को ट्रू लेने का मतलब है कि इंडिविजुअल ट्रू आएगा. मेरा इंडिविजुअल हमेशा ट्रू आएगा. ठीक है, मेरा इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? हमेशा ट्रू आएगा. So what is the value of X I got? Value of X I got as a false. I know that you people are having a problem. I am explaining. So the value of X I got as a false. जैसे ही कोई भी वेरिएबल मिला उसको साइड में लिख लो. तो मैंने X की वैल्यू क्या ले लिया? false ले लिया. लेकिन ये पूरा ब्रैकेट तो ट्रू है ना बेटा, ये और आया है तो ये 100% ये क्या होगा? ये आपका ट्रू ही होगा. तो negation of Q is true, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? false आ जाएगी. सब्स्टिट्यूट कर दो, Q की वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स आ गई. P की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू दी हुई है ना, P की वैल्यू ट्रू दी है तो P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू अगर ट्रू ले लिया तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा. उसके बाद में ये देखो ब्रैकेट के बीच में, सबके ब्रैकेट के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है. तो एंड हेट्स फॉल्स. आई होप यू रिमेंबर दिस. एंड ने जैसे ही ये फॉल्स ने एंड देख लिया, लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा. ठीक है, false will implies anything. What you will be getting? You will be getting the whole statement. You will be what? You will be getting the whole statement as a true. So basically we can go and we can try to find out with respect to this. So in this way we can go and we can find out. See, जो चीज सच है आप उसे गलत नहीं साबित कर सकते. This is example. Sir, ये सारे केसेस में लगेगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले प्रैक्टिस कर लो. See, as I told you, I won't be teaching until and unless everybody, एक बच्चा भी रहेगा वो पढ़ेगा मेरे से, मैं उसको परफेक्ट बनाऊंगा, उसके बाद में ही we'll go and we'll try to understand this thing. ठीक है? I will give you all the types of explanation. I will give you all the types of explanation. Okay? Let's see the other example also. Suppose if I will be having this
P, and let's consider this is P implies Q, and let's consider this is nothing but Q is implying X. And then the whole statement is what? The whole statement is basically defining as what? The whole statement is basically defining as a X. तो क्या करना है? पहले आप इसको true ले लो. Let's take this as true. Try to take this statement as a false. As soon as you will get any variable value, write down. कहीं तो साइड में लिख लो. X की वैल्यू क्या आ जाएगी? False आ जाएगी. But this bracket is has to be what? The bracket is has to be true. The whole bracket is has to be true. The whole bracket is has to be true. So what is the value of Q? Q की वैल्यू ट्रू लोगे? नहीं. True implies false. False होगा. मेरे को Q की वैल्यू क्या आएगी? True आएगी ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? What is the value of Q that I will be getting here? So here that I will be getting what is Q value I will be getting as false, because if I will take true, then here Q basically I will be getting as a false. Now substitute the Q की value as a false. What is the value of P? I got as a true. What is the value of P? I got as a true. So this one will become a true. True implies false. This one will see false, and false will see and. The left side will become what? The left side will become a false. False implies anything. The whole statement will become what? The whole statement will become a true. So this is also going to be what? This is also going to be tautology. If you do not believe on me, ट्रूथ टेबल बनाओ ट्रूथ टेबल. तुम लोग अभी बनाओ ट्रूथ टेबल. ठीक है? बिलीव नहीं है, ट्रूथ टेबल चेक करो कि टोटोलॉजी है या नहीं है. ठीक है? ठीक है ना? So in this way you can go and you can try to explore this whole thing. In this way you can go and you can try to explore the each and everything that is related to that. Okay? So this is one type. और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों को क्या करना है कि मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? उसके बाद में फिर मैं अनअकैडमी पे मेरा ना डीपीपी डीएम करके सीरीज है. किसमें? अनअकैडमी पे डीपीपी डीएम करके. तो आज तो नहीं, लेकिन कल से मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि डीपीपी डीएम 1 देख लो, डीपीपी डीएम 2 देख लो. No, Pranav, I will take another example. Don't worry कि क्वेश्चन सेम है तो. You give me one example. You आप पोस्ट करो, मैं सॉल्व करूंगा. डीपीपी डीएम का सीरीज दे लूंगा. ठीक है? उसके बाद में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. I can take another example also. Let's consider. If you want me to take a large amount of variable, I can take a large amount of variable. Let's consider. Suppose if I will be taking this. So suppose if I will be taking here. Let's consider this is nothing but here P. Okay. Let's consider this. Suppose if I will be writing P or negation of T, and if I will be taking T, and here if I will be taking P is implying S, and if I will be taking S is implying M. Okay, and let's consider the whole thing is implying what? Okay, the whole thing is implying M. If you want me to take 3 variable, 4 variable, I can also take a 3 variable, 4 variable. Let's take this particular cases. इसमें क्या करेंगे? पहले वाले को इसको false ले लेंगे. ये individual आपका क्या आएगा? True आएगा. This one is also going to be true. This one is also going to be true. This one is also going to be true. Now what you will be getting? As soon as you got the values of M, try to substitute. M will become a false. So if this one will become a false, I will use a different pen. If M will become a false, then the whole is true. It has to be false also. So the value of S I got as a false. Try to substitute. If S is false, P will become also false. So I got the value of P is what? False. Now try T is what? 3 is true. Now what is the value of P? Value of P I am getting as a false. Or negation of T. What is negation of T? What is the value of T I got? T is true. Negation of T will become false. False are false. False will see and left side will become a false. False implies anything. नहीं DPP free है, DPP free है, DPP free है, totally free है. तो false implies anything, the whole statement will become a true. ये आपका true है. ठीक है? DPP आपका पूरा free, DPP DM पूरा free है आपका. So this statement will become what? This statement will become a true. So ये tautology हो जाएगा आपका. ठीक है? ये आपका tautology हो जाएगा. कल से मैं लिंक दूंगा, कल से मैं बताऊंगा कि ये DPP वहां मिलेगा, ये DPP वहां मिलेगा. इस तरीके से will be getting. No, it is a tautology. Hiren, it is a tautology. Hiren, I will tell you your mistake. Your mistake is this. आपने ना ये T true आएगा, ये true आएगा, लेकिन आपने ये गलत लिखा होगा. It will require a lot of practice. It will require a lot of practice. Basically, you can understand. Sir, can you give me one example where? Okay, can you give me one example where I can go and I can try to have a yes, I can give you that example. P, and then let's consider this one.
This is P and okay. Okay, let's go and let's try to find out it's a tautology or not. So suppose if I will be taking this statement will become what? The statement will become false. ये आपका true आ जाएगा and this one will also be true. Now what will happen? The value of P I got as a false. What is the value of Q? Q I got as a true. Now what is the value of P? See, try to understand this. See, try to understand here what I will be getting. This one is true. This one is also going to be true. So value of Q I got as a true. So what is the value of P? P is I got as a false. What is the value of Q? Q I also got as a true. So false implies true. It will become a true. True and true, and then it will implies false. Hence the whole statement will become what? The whole statement will become a false. Hence not tautology. Hence not tautology. I am trying to take each and everything, hence not tautology. Hence not tautology. For P implies Q, why can't we take P as a false? I am taking it now. Hence it's not a tautology because this convert. See, as I told you, you have to convert the left side. You have to consider. See, please follow my procedure. Otherwise, you'll have lot of problem. Let's consider if I will take this as true and I have to take this as false. Left side I have to take true and right side I have to take false. And accordingly, आप क्या करो मालूम है? वेरिएबल पता करने की सोचो कि इसका वेरिएबल का ये वैल्यू आएगा, इसके वेरिएबल का ये वैल्यू आएगा, इसके वेरिएबल का ये वैल्यू आएगा, and try to substitute here. Okay, and then try to substitute over here, and then as soon as you will be substituting, you will be getting all the values. You will be getting all the values. So in this way, you can go and you can try to solve all the types of questions that is related to that. So what I taught you today is type 1 only. मैंने सिर्फ आज आपको type 1 ही बताया है. This is basically the type 1 type of questions. ये आपका type 1 है. ठीक है? In this way, you can go and you can try to solve it. If you have any problem, okay, feel free to be in contact with us. So आज के लिए सिर्फ इतना ही, पहली क्लास थी. ठीक है? I hope you have enjoyed. And those people who have not followed me on, because first we are trying to make not talk. Yes, Shiva. Okay, so my name is Satish Yadav, and those people who have not followed me on Unacademy, try to follow me on Unacademy. ठीक है? Try to follow me on Unacademy. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. Thank you so much. I hope you people have got it. Okay, so my name is Satish Yadav, and thank you so much. And DPP DM is free, so anybody can see it. And if anyone wants to take a subscription, they can use this code, and that code is what? That code is BABA20. ठीक है? सबसे पहले तो अनअकैडमी पे फॉलो करो. सबसे पहले अनअकैडमी पे फॉलो करो. ठीक है? Thank you so much. Thank you so much for listening, and thank you so much for all of your coming. You are also having the next class 7 o'clock, 7:15 I think so. We'll have the next class, UA class. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys, for coming here and making this good class. Okay? Thank you so much. Thank you so much. Okay? Thank you so much. Have a good day. Have a great day to all of you.